Good afternoon, class 5. How are you all? Hope you all will be doing good in your home. So, class 5, now this was the last chapter, two last chapters, 62 and 63, in your course book of GK. We are going to discuss first chapter number 62. Up to chapter number 66, we have discussed already in the live classes also and the video classes also. Now, we are going to discuss chapter number 62. Traffic rules unit, life skills and value education. Okay, this unit we have to discuss traffic rule chapter number 62. Then after child safety. Okay, these two chapters are there, we have to discuss. So let's start the traffic rules, page number 79. I request you all to open page number 79, chapter number 62. Although we have completed this chapter in the live classes, but again I am explaining you for your revision. Please listen carefully the video. Okay, let's start. Whenever we go, there are rules. There are rules at school, there are rules at home, and there are rules even on the road also. So कहीं भी हम जाते हैं, by the giving this line, it is clear that wherever we go, there are some certain rules and regulation at that particular place. When we are walking on the road also, when we are traveling, when we are in the home, when we are going to the school, there are certain rules and regulations are there, and we have to follow it. This is the life skills and our value education. This shows in which family background we belong, how our teachers teaches us. ये हमको सारा चीज़ दिखता है कि हम कितने अच्छे हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, हम कितने अच्छे हैं कि हम सारी चीज़ों को बाकायदा अच्छे से सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं. ओके, नाउ टिक what you think is right and cross what you think is wrong. Here are 10 statements are there. We have to tick which statement is correct and we have to cross which statement is wrong. So one by one I will give you which statement is correct. I will read the topic and explain you which statement is correct and which statement is wrong. So listen carefully. If you have not done this work in the live classes, so you have time to do this work in your video class with the help of video class. So let's start. First one, always walk on the footpath. If there is no footpath, walk on the extreme right hand side of the road. So this one is the correct. ओके, वी हैव टू टिक इट राइट. क्यों? क्योंकि हमको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. फुटपाथ इज ऑलरेडी गिवन. फुटपाथ, पाथ मीन्स रास्ता, फुट मीन्स हमारे पैर. सो हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ पे फुटपाथ बना हो वहाँ पे हमको चलना चाहिए. क्लियर है? अगर इफ फुटपाथ इज नॉट देयर इन द रोड, सो वी हैव टू वॉक एट द राइट हैंड साइड प्रॉपरली. दिस इज अ ट्रैफिक रूल. ओके, सो ऑल ऑफ यू टिक राइट. नाउ सेकेंड, if a car is still far away, run across the road without looking. सेकेंड चीज, कार हमसे बहुत दूर है फिर भी हमको दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए. नो, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट. ठीक है, वी हैव टू वेट for to stop the car or to cross the car, then after we will cross the road. So it is a wrong practice. Put wrong in it. Okay everyone. Now third one, if a car is still away from third one, put your hand up to stop the rushing traffic and walk across. It is a wrong practice. We are not traffic police कि हम कार ऊपर करें, hand ऊपर करें और walk करें road पे. Okay, so this is also wrong practice. Fourth, ignore the zebra crossing or footbridge. No, we don't have to ignore the zebra crosses. Okay, we have to follow the traffic rules, so it is also a wrong practice. Fifth one, while on the bus, shouting or making noise will make the driver happy. This is also very wrong. While traveling on a bus, shouting or making noise is not a good habit. It is a very bad habit. Sixth one, never cross a road at a curve, as the motorist taking the turn will not able to see you in time. Yes, it is true. कभी भी हमको मोड़ में रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेन एवर मोटरसाइकिल हु इज ड्राइविंग द मोटरसाइकिल और कार, he is not able to see us, they were not able to see us, and this is a good thing that we have to wait to cross it, then after we will cross the road. Seventh, all the bus stand always follow the queue, board the bus only after it has come to a halt without rushing in or pushing others.
येस इट इज़ ट्रू, हमको हमेशा क्यू में रहना चाहिए बस स्टॉप में, और जब तक बस स्टॉप में आकर ना रुके वी डोंट हैव टू सिट. ठीक है, किसी को पुश करते हुए धक्का देते हुए बस में नहीं बैठना चाहिए. 8th वन, इफ द बस इज फुल स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस. जो फुटबोर्ड होता है वहाँ पे खड़े हो जाओ अगर बस पूरी भरी हुई है तो. नो, दिस इज ऑल्सो वेरी बैड प्रैक्टिस. 9th वन, पोक योर हेड आउट ऑफ द मूविंग बस एंड एंजॉय द ब्रीज ऑन योर फेस. दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. कभी भी हमको वी डू नेवर पुट आउट अवर हेड आउट ऑफ द विंडो. ओके. 10th वन, hoop off a bus as it begins to slow down. कूद कर बस से नीचे उतर जाना जब तक बस स्लो हो रही है. इट इज नॉट स्टॉप्ड, ओनली द बस इज स्लो. सो कूद के बस से नीचे उतर जाओ. दिस इज अ गुड प्रैक्टिस? नो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. ओके. So these are the 10 traffic rules are given in your book. We have to follow it properly. Okay students, now everyone, we are going to discuss chapter number 63, child safety, page number 80. Okay, so I have already discussed this chapter with you people in very vast manner. So बार बार इस चीज़ को रीड करके पैराग्राफ को क्या बताऊँ. सो मैंने तुमको एक स्टोरी इसमें दिया हुआ है, उसमें मैंने तुमको बताया था देयर इज़ अ गर्ल हुज नेम इज़ खुशबू एंड शी इज़ 10 years old. शी इज़ लिविंग in a joint family with her grandparents, uncle, aunt, their children, everyone were living with her. And she has one uncle whose name is Uncle Raj, and Uncle Raj is very fun loving person. वो सबसे बहुत प्यार करते थे, सबको गिफ्ट्स देते थे. उनके 2 बच्चे थे. ओके. एवरीवन्स फेवरेट द अंकल राज. वो सबको खाना पीना गिफ्ट्स ला के देते थे. ठीक है, तो वो अंकल राज थे. सो वो तो बहुत अच्छे हैं. Uncle Raj is very good person. What happened? Few months back, क्या हुआ कुछ टाइम बाद पहले उसने क्या देखा कि अंकल राज what he is doing. जब भी वो घर पे अकेले रहती थी खुशबू, that girl खुशबू, whenever she is alone in the home, what he did, वो उसको unnecessarily without her permission उसको टच करते थे. he touches her. Okay, but she don't like these things. वो बहुत डर जाती थी. शी बिकम्स वेरी स्कैर्ड. वो बहुत डर जाती थी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. ओके. एंड ही ऑल्सो वॉट ही डिड ऑल्सो इन द पास्ट मंथ्स, ही गिफ्टेड हर डॉल एंड टेल हर दिस इज अवर सीक्रेट, डोंट टेल टू एनीवन. वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, उसको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता था. शी बिकम्स वेरी सैड, स्कैर्ड, एंड शी इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज. दिस थिंग्स हैपन टू हर. And she is also telling that she is very scared to telling the parents also. वो अपने पेरेंट्स को बताने से भी बहुत डरती थी, उसको शर्म आता था. she is ashamed of these things. so what she did, क्या करना चाहिए उसको, मैंने बताया आप लोगों को क्या करना चाहिए. okay, so this is a story of a small girl she is only 10 years old and these things happens with so many people beta, but they were not able to tell to anyone. but we have to stop this. जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे. सो वी हैव टू स्टॉप दिस थिंग्स. वी नेवर स्कैर्ड ऑफ दैट बिकॉज यू पीपल वे आर नॉट डूइंग द रॉन्ग थिंग, दैट पर्सन इज डूइंग द रॉन्ग थिंग. he or she has to be scared, not you. Okay, so what measures she must take to stop these things from the unnecessary activity of Uncle Raj. So what things were given in your book, I am going to explain you. Listen carefully all of you. So खुशबू is afraid to tell her parents. What she do? Here it is written that वो तो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा. She is very scared. So what she do? क्या करना चाहिए था उसको? So here 4 options are there. Which option is correct? I am telling you, and I have already told you. So you people must know which option is correct. Run away from home. घर से भाग जाना. Keep quiet because no one will believe her. चुप रहना क्योंकि कोई भरोसा नहीं करेगा. Because Uncle Raj is a very good person. टेल रानी एंड राहुल अबाउट देयर फादर. जो उसके अंकल राज के 2 बच्चे थे रानी और राहुल, उनसे बताएं. नो. टेल हर टीचर और एन अडल्ट इन द फैमिली होम शी कंफर्टेबल विथ. या ऐसे किसी को बताएं जो उसकी फैमिली में हो और उसके ऊपर बिलीव कर सके. ठीक है, दीज आर द 4 important points were given
What she did, क्या करे वो? Fourth option is correct. She has to tell one to her teacher or some other adult person from her family who believe her and support her and tell to her parents to stop this activity which is done by Uncle Raj. Okay, उस चीज को वो stop कर सके. So solution, what is the solution? Here solutions are given. Khushbu should tell an adult family member whom she is comfortable with. This is a good solution and very important solution. Running away from anything is never the solution. किसी भी चीज़ से भाग जाना, उस पे चुप हो जाना, भाग जाना, ये एक सही solution नहीं है. ठीक है, घर छोड़ के भाग जाना, सुसाइड कर लेना, this all things are bullshit. They are rubbish things. This is a very bad thing if someone do that like this. Okay, now you people were day by day growing up, so you have to understand what is good and what is bad. Okay, by keeping quiet she will only encourage her uncle to continue what he is doing. चुप रहना ये भी सही solution नहीं है, क्योंकि हम चुप रहेंगे तो हम सामने वाले को बढ़ावा देंगे. We will encourage them to do such things. Okay, this is not also a solution. It is extremely difficult to tell two young children about their father being a bad person. और उनके बच्चों को बताना कि उनके पापा गलत है, छोटे छोटे बच्चों को, ये भी बहुत बुरी बात है. Khushbu should immediately build up courage to tell her teacher or a responsible adult about her problem. So what she has to do, she has to build an encouragement आना चाहिए, उसको courage build करना चाहिए and tell some of the adult family member from her family or to her teacher whom she is comfortable. Okay, that person could speak to her parents on Khushbu's behalf. Initially there will be a lot of unhappiness within the family, but the main thing is that Khushbu will be safe. This is very good कि हम किसी बड़े को बता दे. भले फैमिली में कुछ दिन के लिए तनाव होगा, देयर विल बी अनहैप्पीनेस, सम पीपल्स वर फीलिंग सैड, लो, बट एट द एंड द मेन थिंग वाज दैट द चाइल्ड गर्ल खुशबू विल बी सेफ. वो खुश रहेगी और सेफ रहेगी. ओके, हर पेरेंट्स हु लव हर एंड विश द बेस्ट फॉर हर विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट हर व्हेन दे रियलाइज द ट्रूथ. कुछ दिन के लिए सबको प्रॉब्लम होगी, सब दुखी होंगे, बट एट लास्ट देयर पेरेंट्स, खुशबूज पेरेंट्स विल बी हैप्पी दैट समथिंग they will did for Khushbu. They realize the truth. When they realize the truth, they will become very happy for Khushbu. वो बहुत खुश होंगे कि हमारी बेटी बच गई. Because being quiet is a not good thing. ओके, रनिंग अवे फ्रॉम द फैमिली इज़ नॉट अ गुड थिंग. चुप रहोगे, लोगों को बढ़ावा मिलेगा गलत काम करने के लिए. सो कभी भी बेटा, ये चैप्टर पढ़ाने का सिर्फ एक मोटिव है आप लोग को कि कभी भी ये चीज़ अगर आप लोगों के साथ होती है, सो प्लीज़ टेल टू योर पेरेंट्स. ओके, नेवर हाइड दिस थिंग्स टू योर पेरेंट्स. हमेशा अपने मम्मी पापा को ये सारी गलत चीज़ें बताओ. ठीक है, नहीं बताते, कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसे लोगों को बताओ जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो. टेल टू योर टीचर. ओके, बट डोंट encourage this type of bad things if anyone doing with you people. Okay, so that's it for this chapter and we have completed this chapter, student. And now after that all the chapters were completed. After that only these test papers were given. So test paper we will discuss in the live classes, and in the video let's see what I will do or what I will give you later on. Take care of yourself everyone. Enjoy your day. Thank you so much class. Have a nice day all of you.